Good morning, students. Today we are going to start with the next topic, that is your production system. In the last session, we have discussed about space search, set space search. Let us start with the production system. Production system is nothing but a search process forms that the core of many intelligent processes, right? It produces it's just in search process forms, right? Of basic intelligent processes or core of many intelligent processes, right? So it is generally useful to do a structure artificial intelligence program in a way that facilitates describing and performing the search processes, right? So it is generally useful for the structural AI programs modeling. Right. Third point is production system provides such structures, right? जो structured AI programs है उनको build करने के लिए या फिर उनको describe करने के लिए search processes को production system का इस्तेमाल होता है. Production system generally consists of four sets. That is, first one, a set of rules. Second, one or more knowledge or database. Third one is control strategy, and fourth is rule applier. Right. So these are the four main points that is totally based on the production system. Right. So let us start with the first point: a set of rules. That means each consistence of a left side that determines the applicability of the rule, and a right side that describe the operation to be performed if that rule is applied, right? So it is totally dependent on the rules. So generally it's having two part, right? In single thing, it's having two part, that left and right. So left side that would determine the applicability of the rule, and right side will describe the operation that to be performed when it is applicable, right? So it's having a first point, that is a set of rules. Secondly, one or more knowledge or database, right? So in that it contains whatever information is appropriate for particular task that is to be done, and some part of the database that may include that may be a permanent set, or while other part it may having some certains of solutions to the current problems, right? So it is second point will have the will contain information related to the knowledge or database in an appropriate manner and for some particular task. Third is control strategy. Control strategy generally specify the order, right, in which the rules will be compared to the data. Just a minute. Okay. It is compared to the database generally, and a way to resolving the conflict that arise when several rule matches at once, right? It suppose set of rules है और database में से वो set of rules work कर रहे हैं, right? तो control strategy क्या करेगी, वो एक order में rules को compared करेगी, right? ओके, तो ये सेट ऑफ रूल को कंपेयर करेगा डेटाबेस के, एंड अ वे ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइजेस व्हेन सेवरल रूल्स मैच एट वंस. वो सेवरल रूल्स अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं मैच होने के वक्त, या राइट एक एक टाइम पे मैच होने के वक्त, तो उसको सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को वो कंट्रोल करेगा. फोर्थ वन इज अ रूल अप्लायर. इन दैट द कंप्यूटेशन सिस्टम that particular implement the rule strategies, and it will applies this rule, right? At once अगर computational system पे हमने rule को implement कर दिया है, ठीक है, control strategy के वक्त, then उसके बाद भी वी कैन अप्लाई द सेकेंड रूल, एंड साथ ही साथ वहां पे हम दूसरा रूल भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट यहाँ पे वो चीज नहीं है कि अगर एक बार आपने रूल अप्लाई कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट? एक रूल अप्लाई होने के बाद यू कैन अप्लाई द सेकेंड वन, राइट? सो रूल अप्लायर, राइट, ये कंप्यूटेशनल सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड द कंट्रोल स्ट्रेटेजी एंड अप्लाई द and applies the rule, right? So these are the four steps that
uh, is concluded with the production system. Now, next is in order to solve a problem. Now, to solve a problem, what we need to do, right? तो उसके लिए कुछ points हैं. First one is we must try to reduce it into the form in a precise statement can be given. This can be done by defining the problem state space, that is start and goal states, and a set of operation for moving that space, right? सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट. उसके बाद फर्स्ट उसे रिड्यूस करना है, यानी इनटू द सिंपल फॉर्म में अगर उसको ला सकते हो तो आप उसको रिड्यूस करते जाओ, और प्रिसाइज स्टेटमेंट उसका दो. साथ ही साथ जो प्रॉब्लम स्टेट सर्च है, यानी जो इनिशियल एंड फाइनल स्टार्ट एंड गोल स्टेट्स हैं, उनको माइंड में रख के ही आप सेट ऑफ ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो स्टेट सर्च में. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट इज द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय सर्चिंग फॉर अ पाथ through the space for an initial state to a goal state. अब प्रॉब्लम को आप सॉल्व किस तरीके से कर सकते हो? सर्च कर सकते हो एक पाथ के लिए थ्रू द स्पेस, राइट, जो हमने आगे आगे वाले टॉपिक में किया था, फॉर इनिशियल स्टेट एंड द गोल स्टेट. गोल स्टेट और इनिशियल स्टेट के लिए आप वो चीज कर सकते हो. थर्ड स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम कैन यूजफुली बी मॉडल एज एन प्रोडक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम. ठीक है, ये प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम है, इसको जनरली मॉडल करते हैं, उसको हम प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं. अब बेनिफिट आप बोल लो या फिर एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम बोलो, तो उसमें आता है प्रोडक्शन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट टूल फॉर स्ट्रक्चरिंग आर्टिफिशियल प्रोग्राम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम. जैसे मैंने आगे आपको बोला था कि ये एक बहुत ही एक्सीलेंट टूल है जो प्रोवाइड जो यूज होता है स्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए. सेकेंडली, production systems are highly modular because the individual rule can be added, remove and modify independently. यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम है वो हाईली मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर और वी कैन राइट फ्लेक्सिबल. क्यों? बिकॉज जो भी इंडिविजुअल रूल्स यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, राइट. सो इट इज मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू द अदर सिस्टम्स. Third point, the production rule are expressed in a natural form, so the statement contained in the knowledge base should be easily understandable, right. जो प्रोडक्शन रूल है वो नेचुरल फॉर्म में ही हमेशा उसको स्टेटमेंट किया जाता है, क्योंकि जो नॉलेज बेस है उसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, यानी उसको इजीली समझ सके. प्रोडक्शन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देयर आर 4 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम, नॉन मोनोटोनिक, partial commutative production system and commutative production system. अब मोनोटोनिक की बात करें तो इट इज एप्लीकेबल और इट्स द एप्लीकेशन ऑफ द रूल now that prevents the later application to another rules that could have been applied at the time of first rule was selected. That is, rule are independent, right? As I have already told that when we are applying any kind of rule, we can change it later on, or we can edit it or replace it with the other rule, right? So it is more flexible. So it comes in a monotonic production system. Non-monotonic, that the production system is one in which this is not true, right? So it's an opposite of monotonic production system. Third, partially commutative production system, in which it consists a system with the property that if application of a particular sequence or of rules transform state X to state Y, then allowable permutation to those rules are also transform state X into the state Y. Suppose we are
having some set of rules, right, जिसकी property है कि वो particular sequence rule transformation कर रहा है, यानी x tends to y अगर हम लिख रहे हैं तो x में से y को transform कर रहा है, right, from one state to another, राइट. सो देन उसका जो परम्यूटेशंस होंगे, परम्यूटेशंस का मतलब उसके जो नेक्स्ट स्टेप होंगे या उसमें से जनरेटेड होंगे, उस पे भी वो सेम रूल अलाउएबल होगा या एप्लीकेबल होगा, और वही रूल वो भी सेम रूल के जैसे ही ट्रांसफॉर्म होंगे फ्रॉम स्टेट एक्स टू स्टेट वाई. दैट कम्स इन द पार्शियल कम्यूटेटिव प्रोडक्शन. अब कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम में क्या है? कम्यूटेटिव production system is a production system that in both monotonic and partial commutative, it will add it in the both the thing. Partial commutative भी कर सकता है और monotonic commutative system भी वो generate कर सकता है. अब control strategies की बात करें तो there are two good control strategies. सबसे पहले देखते हैं control strategies क्या है. Control strategy will help us to decide which rule is to be applied next during the process of searching for a better solution of a problem, right? कोई भी solution, कोई भी problem है, उसके अगर number of solution है, उसमें सबसे better और quick solution कौन सा है, उसको और कौन से rule से हमें better solution मिल सकता है, तो that come part in the control strategy. तो उसके लिए दो good strategies हैं. It should cause motion and it should be systematic, right? First, it should cause motion, and second, it should be systematic. So basically, control strategies would be classified into two types, that is uniformed or blind search control strategies, and second one is informed and direct search control strategies. Uniformed सॉरी अनइन्फॉर्म्ड है और या फिर ब्लाइंड है, तो उसे उसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या आते हैं, जैसे डू नॉट हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट बियॉन्ड प्रॉब्लम डेफिनेशन. ठीक है, प्रॉब्लम डेफिनेशन ही सिर्फ होगी, वहां पे एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी स्टेट्स हैं उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी. टोटल सर्च स्पेस इज लुक्ड फॉर सोल्यूशन. ठीक है, टोटल सर्च स्पेस है वो डायरेक्टली सोल्यूशन के लिए ही लुक करेगी, उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स के लिए नहीं. जैसे कि एग्जांपल हो गया बीएफएस, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएलएस डेप्थ लिमिटेड सर्च. तो these are the examples that would be covered in the uninformed or blind search control strategy. अब इन्फॉर्म की बात करें और डायरेक्टेड की बात करें तो उसमें सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम स्पेस इज यूज्ड टू कंप्यूट प्रेफरेंस अमंग द वेरियस पॉसिबिलिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपांशन. ठीक है, एक्सप्लोर और एक्सपांशन के लिए थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम डेफिनेशन के साथ उसके स्पेस और स्टेट स्पेस की भी आइडिया होगा, और उसके विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड द बेटर पॉसिबिलिटीज of exploration and expansion of that particular system. उसके लिए एग्जांपल हो गया बेस्ट फर्स्ट सर्च, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन, एस्ट्रिक एंड मीन एंड एनालिसिस, राइट? So yes, that's it for today. If you have any doubt or query regarding this, regarding any topic of this, you can contact me. Thank you so much.